Hello and welcome back students. In today's video, we will be discussing about the ways of maintaining a good health. Previously, we have discussed how there are different types of diseases and how they can affect us in different ways, right? So in order to be safe, in order to be away from those diseases, we should keep our body healthy. We should have a strong immunity so that if any kind of disease would hit us, it is going to be easier for our body to fight with it. Okay, so we are going to discuss some of the ways in which we can, make our body good and healthy. So let's start with the first one, that is, you should all have a balanced diet. All right, balanced diet mean that we should all be taking different types of food, जैसे कि fruit हो गया, vegetable, milk, meat and cereals. All right, so all of these things are very important for us, but keeping it balanced मतलब हर चीज आपने एक amount में लेनी है, so that would keep our body healthy. All right. The next thing is that you all should be drinking clean water. Drinking a clean water is very important because previously in the contagious disease we learned that there are many diseases that are transmitted through dirty water. All right, so अगर आपका water contaminated है या गंदा है, खराब है, then you have a chance of getting the disease that is contagious. All right, so the next thing that you should do is getting an adequate amount of sleep. यानी अच्छे से आपने सोना है. You should sleep at night, and almost 6 to 7 hours of sleep can make your body fresh and healthy. It is necessary that you should have sound and complete sleep. All right, so next we have that we should all be exercising regularly. We must exercise to remain fit. For example, we can do walk, we can do running, or we can do all kind of other physical activities जो हमें healthy और fit रख सकती है. Alright. इसके अलावा we can maintain our healthy weight. Alright. And we can also try to minimize stress around us. ठीक है, आप लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम रखना है. स्ट्रेस एज एन you don't need to get disturbed or annoyed by anyone else or the things that you are doing. All right, इसके अलावा there is one more thing that we all should do, and that is brushing our teeth regularly. That you should at least uh, brush your teeth twice a day. ठीक है, and once in the morning after getting up and once at the night before going to the sleep. So these are some of the ways that you can do in order to maintain a good health. All right, so let's move on to the next slide. So in this slide, we are going to discuss about a balanced diet and its components. That what are the things that are required for you and which amount of portion. ठीक है, आपको कितने portion एक diet में लेना चाहिए हर different components का. ठीक है, so we take various types of food. For example, we take grains, we take milk, we take fruit, we take vegetables. ठीक है, तो इन सारे फूड को वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. ठीक है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? 4 ग्रुप्स में. द फर्स्ट वन इज द मिल्क ग्रुप. राइट, तो मिल्क ग्रुप में इट इंक्लूड्स मिल्क एंड द थिंग्स मेड ऑफ मिल्क सच एज बटर, चीज एंड योगर्ट. ऑलराइट, तो ये जो है मिल्क एंड डेयरी फूड है. ऑलराइट, तो आपका जो है अगर इफ यू आर हैविंग अ मील इन अ डे, दिस सर्कल इंडिकेट्स कि ये पूरे दिन का मील है. ठीक है, तो उसमें से 2 to 3 पोर्शंस जो है वो आपके किसके होने चाहिए? मिल्क ग्रुप के होने चाहिए या डेयरी फूड के होने चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द सेकंड टाइप, एंड दैट इज ग्रेन ग्रुप. सो व्हाट इज अ ग्रेन? इट इंक्लूड्स व्हीट. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? व्हीट होती है, इसमें राइस होते हैं, इसमें बार्ले होता है. ठीक है, और इसमें पल्सेस होती हैं, दालें वगैरह. राइट, तो यू कैन सी ओवर हियर के
हमारे पास उन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है जो कि इन ग्रेन फूड का है, ठीक है, एंड दैट इज दिस वन। ऑलराइट, इसके अलावा वी हैव अ ग्रुप ऑफ अनदर फूड दैट इज कॉल्ड मीट ग्रुप। ऑलराइट, सो मीट ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इट इंक्लूड्स बीफ, इट इंक्लूड्स मटन, फिश, चिकन, ऑल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू मीट, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि दैट वी शुड टेक 2 to 3 portions ऑफ मीट इन आवर डेली diet. All right, the fourth type of balanced diet includes the fruits and the vegetables. All right, plus vegetables. सो वेजिटेबल्स में क्या क्या हम कर सकते हैं कि हमारे पास देयर आर वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, एंड हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा पोर्शन है इन आवर बैलेंस डाइट, इट शुड बी ऑफ द फ्रूट एंड द vegetables. All right, it is necessary for us to take proper quantity of food from different groups to fulfill the needs of our body. We can strengthen our defense system, जिसको immunity भी कहते हैं, बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट। तो हम बैलेंस डाइट से किसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हमारी इम्यूनिटी को। और इम्यूनिटी एक्चुअली क्या है? इम्यूनिटी हमें हेल्प करती है टू फाइट विद द, इट हेल्प्स अस टू फाइट विद द डिजीजेस, ठीक है। डिजीजेस को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होनी चाहिए, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ वी आर हैविंग अ बैलेंस diet. All right, besides that, it is important to know that food requirement vary from person to person according to their age and working style, ठीक है। हर इंसान की जो है नीड जो है डाइट की, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द फॉर द चिल्ड्रंस, इट्स डिफरेंट फॉर elder people, it's different from for the people who are working, ठीक है। तो हर किसी की एज ग्रुप और उसके वर्किंग स्टाइल से डिपेंड करता है कि उसको किस तरह कौन सी डाइट जो है वो बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। A diet that contains different kinds of food in proper quantity to fulfill the need of the body is called a balanced diet. बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? कि जिसमें डिफरेंट फूड, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारे फूड एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो। क्या हो? प्रॉपर क्वांटिटी में हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट अ बैलेंस diet is and how can we make our immunity strong. See you guys in the next video.